Very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel, Let's Learn Together. So, welcome back once again to all of you, my dear students. So, we are going to talk about before the industrial revolution. यानी इंडस्ट्रीज आने के पहले, फैक्ट्रीज बनने से पहले क्या होता था? What was happening before the industrial revolution? So, let us closely find the relation between two words, that is factories and इंडस्ट्रीज. ये दो वर्ड्स के बीच में हम लोग जरा क्लोज रिलेशन देखते हैं, वेदर दीज टू वर्ड्स फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर equal in value, are they equal, or is there any difference between these factories and industries? Let us find a relation between them together. So here is the relation. फर्स्ट पहले हम लोग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल when we were there, way down. सो पहले हम लोग जो है ये समझते हैं कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है, या एक दोनों दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं. लेट अस गो थ्रू. हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हुआ है तो हम लोग सोचे क्या, उसके साथ साथ हम लोग ये समझने लगते हैं दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, है ना. इफ वी थिंक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट ऑन द अदर हैंड वी थिंक दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज. And on the other hand, you can see, when we see that industrial production is going on, then what we think, that factory production is going on. Means we are relating that if industrialization is going on, then it means what, growth of factories is means factories are increasing day by day. And if industrial production is going on, then we see, oh, factory is producing. And if you talk about industrial workers, then what we think about, factory workers. Means our mind used to correlate them, means equally, we think equally about the factories and industries. But let me tell you, my students, that there is a problem with such ideas. ये एक जैसा नहीं है. Factories and industries differs. ये दोनों अलग अलग चीज है. Yes, they are working together, but they are different, and that we have to see. We think that industrialization started with the setting of factories. हम लोग ये सोचते हैं कि factories के start होने से ही industrialization start हुआ, but it is not so, my dear students. Let us move ahead and let us find the difference between the two words that we have just studied, industries and factories. एक एक करके हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं. Let us see. Industries क्या है? It is a segment. Segment means serial order. Means it is something in series. It is a group of factories. Industries is what? A group of factories. It is not a single factory. And about factories, it is a single unit. फैक्ट्री क्या है? एक सिंगल यूनिट होता है. जबकि इंडस्ट्रीज क्या बनता है? बहुत सारे फैक्ट्रीज को मिलने से एक इंडस्ट्रीज बन जाता है. So we can't say that industries and factories are equal, because we have seen, अगर आप कहेंगे कि फैक्ट्री इज ए सिंगल यूनिट, then industries is what? It is a group of factories. On the other hand, you can see, for example, that Maruti Suzuki is a company which is operating in ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. मीन्स कार्स वगैरह बनाना, है ना, ये सब काम करता है मारुति सुजुकी. कार बनाना और बड़े बड़े कार, छोटे छोटे कार्स, ऑल टाइप ऑफ कार्स, दे आर इन्वॉल्व इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि गुड़गांव का प्लांट जो है मारुति सुजुकी का, द प्लांट विच इज देयर इन गुड़गांव इज ए सिंगल फैक्ट्री. But Maruti Suzuki is not a factory. Maruti Suzuki is an automotive industry. It is the name of a company which is dealing in automotive industry. But Gurgaon plant of Maruti Suzuki is what? A single factory. So its factory is a single unit. Here you can understand with the help of example. And one more thing, my dear students, industry does not always need factories. Industry का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि factory ही होना चाहिए. Such as IT industry. आईटी इंडस्ट्री में तो कोई फैक्ट्री नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं और लोग होते हैं काम करने वाले आईटी इंडस्ट्री में. सो आईटी इंडस्ट्री डज नॉट हैव फैक्ट्रीज वेयर दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. they are not creating or manufacturing something in IT industry. They are just developing softwares. They are just creating a contact between the hardware and the software. That is going on in the IT industry. So industry बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा कि वो फैक्ट्री होगा ही उसका. Sir, and one example is what?
about the IT industry. So industry is more like a domain. Industry क्या है? Is like a domain, like a website. जैसे वेबसाइट होता है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. So industry is a website, and the pages which are included in the website are the factories, or you can say this its unit. Likewise, you can say that platform, a railway platform is a industry where many trains are coming and going, and leaving. Someone coming, and someone leaving. Those are factories. So industries are like a domain. Factories always need to be under industries. यानी फैक्ट्री का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी इंडस्ट्रीज के अंदर जरूर होगा. बट लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री होगा तो फैक्ट्री होना जरूरी है. So there is a relation, there is a difference between them, but they are quietly related. You can say they are quite related to each other, but there is a difference. Industries, it means what? It is the production of materials. People are producing and other workers are producing some materials, or even they can produce some service products that contribute to the economy of a country. So industries is the production of materials, and factory is the location, is that particular building where they are manufacturing such products. So factory is a building, while industry means that is production. यानी सामान को बनाना, that is industries, और सामान जहां बनता है वो क्या है? फैक्ट्री है. वो बिल्डिंग वो फैक्ट्री है. On the other hand, you can say that it refers to the production of, industries refer to the production of economic goods such as materials, है ना. कोई भी आप देखते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल से मिलके ही एक बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है ना. So plastic is a material from which we can make pen also. So the production of plastics means the production of those materials which is just connecting, or which is increasing the economy of the country. They are economic goods. So industries are the production of those materials, while फैक्ट्रीज आर द एक्चुअल लोकेशन, वो जगह जहां पर वो मटेरियल्स को यूज करके हम लोग कोई प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं. सो फैक्ट्रीज आर द एक्चुअल लोकेशन वेयर द मटेरियल्स और द प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड. माय डियर स्टूडेंट्स, hope you got the difference between industries and factories. Hope I Let us move to our next topic, that is before the industrial revolution we were talking about, and that is this slide is quite important, my dear students, from the board point of view, examination point of view also, that even before factory setup there was a large scale industrial production for the international market. Means when there were no factories, जब factories नहीं होते थे तब भी क्या होता था? large scale production होता था. It was there. Large scale industrial production was also there for the international market, even in the absence of factories. This was not based on factories, means those industrial production which were on large scale also, but they were without the factories. So this phase of industrialization, that is large scale production of goods without the, or in the absence of factories, is known as proto-industrialization. Means it is the period when people used to produce a large scale production without the factories. Now how they were producing, how were they producing the goods without the factories, that we will deal in the later part of the chapter. So first of all, you will have to understand this definition of proto-industrialization, that it was such a time when large scale production took place in the absence of modern factories. अभी जो modern factories नजर आ रहे हैं, इन सब के बिना भी production होता था पहले, और large scale में होता था. और किसके लिए होता था? For the international market. International market के लिए फिर भी production हुआ करता था without the factories. And that era, that time is known as, those particular phase of industrialization is known as proto-industrialization. In the 17th and the 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. When, remember, in the 17th and the 18th centuries, यानी ये 200 साल के अंदर ये 17th to 18th centuries, merchants means traders from towns, they started moving towards the countryside, means started moving toward the villages. Town से लोग जो है traders जो है वो कहाँ तक पहुंचने लगे? Villages तक. For what? For what? They wanted to supply money to the peasants as well as the artisans in the villages, and they convinced them to produce their products for the international market.
क्यों कोशिश करने लगे वो? Because they knew that it is really very hard in towns to produce goods, because labor cost in the towns, and even there were many problems in the towns. That's why the merchants were moving towards the countryside, towards the villages, and they were persuading, or you can say they were trying to convince the peasants, means the farmers, the laborers of the villages, and even the artist people who do not have work all the year throughout the year. So they tried, these European traders or the merchants, they tried to move to the countryside and convince the people to make or produce goods for the international market for them. But there was few reasons why the merchants were moving from the towns to the villages. There might be some problem. So let us see what are the reasons for employing peasants and artisans from villages, है ना? इसके पीछे आपके मन में आ भी रहा होगा क्वेश्चन कि भाई क्यों टाउन छोड़ के कोई जो है विलेज के साइड जाता है, तो क्या रीजन है, लेट अस सी, और किसको फायदा और किसको नुकसान है, लेट अस सी. Reason number one, that is a huge demand. With the expansion of the world trade and the position of colonies in different parts of the world, the demand for the goods increase. अब क्योंकि demand ज़्यादा है, then if the town is not supplying the goods in sufficient manner, in sufficient order, or in sufficient quantity, then these traders were moving, these merchants were moving to the countryside, means that is towards the villages, because there was expansion of what, world trade, है ना? लोग जो है ट्रेड जो है अब वो जो है लिमिटेड नहीं था. The trade was not limited at that time. It was moving from one state to another state, from one country to another country, from one continent to another continent. Means the trade was expanding throughout the world. Means people were producing something in, suppose in India, and they wanted to sell it in America and in Australia and in different countries of the world. And even the possession of the colonies in different parts of the world, means there were many places throughout the world that the huge power, the country who was having a lot of power, or the stronger country was occupying the weaker countries, like the Britishers have occupied India. So India was under colonial system, so even there was a demand for the production in those colonies also. So that is why the peasants, the traders, the merchant traders, they were moving to the countryside to meet this particular huge demand. Now another reason, that is the most powerful and the most important reason, is what, that there were few powerful town producers. Means merchants could not expand production within towns because of the presence of powerful urban crafts and trade guilds. Now what are all these? Because merchants were not able to settle there. Suppose let me give you one example, that if you're living in Gaya, or if you're living in Bihar, and you are just selling your products in a particular market, and if some people are coming from West Bengal, from other part of the country, and they wanted to occupy your market, then what would you do? You would always try to remove those competitors from the market. You would always try to remove them by hook or by crook. Means anyhow you wanted, you would like to remove those people who are just coming new in the competition, in the market, in the same market. That was the same thing happening there. See, if new merchants were trying to settle down in the towns, if the new traders or the merchants were trying to settle down in the towns or use the labor of the towns, then what was there? There was some powerful producers, there was some powerful or merchants already present there, and they don't want to settle another new merchants or traders in the towns. And there were some trade guilds also. The guilds means what? A group or union of traders. यानी towns में क्या था कि बहुत सारे traders ने अपना union बना लिया था, है ना? वो ग्रुप बना लिए थे कि हम लोग किसी नए ट्रेडर्स को या नए मर्चेंट्स को हम लोग सेटल डाउन नहीं होने देंगे टाउन्स में. जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग भगा देंगे टाउन से. सो बिकॉज दे वर पावरफुल, पहले से वो लोग टाउन में हैं, पैसे वाले हैं, so that's why they were not letting them settle down in the towns. And that is also one of the reason why new traders or the merchants, they were moving towards village side. और एक रीजन देखते हैं, let us see another reason. ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स. अब ट्रेड गिल्ड्स को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं. लेट अस सी कि ट्रेड गिल्ड होता है क्या. दैट इज एसोसिएशन, यानी कि एक ग्रुप है
किन लोगों का ग्रुप है? ये प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जिनके इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है जिनके, वो लोग हैं यहाँ पर ट्रेड गिल्ड्स में। तो ट्रेड गिल्ड्स में क्या होता है, व्हाट दे यूज्ड टू डू इन देयर एसोसिएशन, दे स्टार्ट टू ट्रेन क्राफ्ट्स पीपल। वो लोग क्या करते हैं, पहले लोगों को ट्रेनिंग देते हैं अपने काम को करवाने के लिए। Because if they are hiring people in the town, and if those people, or if those new particular in the workers, they don't know how to work and they don't know how to produce the goods, then they used to train those craft people. They used to maintain control over production also. That is quite important. ये ट्रेड गिल्ड का और एक काम है, क्या करते हैं वो लोग, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन सा ट्रेडर्स कौन सा चीज को प्रोड्यूस करेगा, दैट दे यूज्ड टू डिसाइड। सपोज इन टाउन्स ओनली पेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी कंपनी। तो जितने भी तरीके के पेन होंगे वो एबीसी कंपनी जो ही प्रोड्यूस करेगा, और कोई XYZ कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता टाउन में। तो ये उन लोगों का अग्रीमेंट है, ये एसोसिएशन है। इस टाइप से वो लोग प्रोडक्शन पर कंट्रोल करते थे। अब जब प्रोडक्शन पर कंट्रोल करेंगे तो जरूरी है कि वो कंपटीशन और प्राइस पर भी कंट्रोल करेंगे। मींस if there will be only one producer in the town, जो एक ही प्रोड्यूसर है जो टाउन में पेन बना रहा है, अब जो लोगों को पेन खरीदना है तो वो उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। दे विल हैव टू बाय द पेन फ्रॉम द सेम पर्टिकुलर कंपनी। अब वो कंपनी क्या कर सकता है, एक प्राइस पर कब्जा कर सकता है, मोनोपोली कर सकता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ पेन इन दैट पर्टिकुलर टाउन। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। सो if you want to buy a pen which is available right now at 3 rupees also, and if there will be only one producer in that town, then that production unit or that particular company might sell it at 30 rupees. And if you need the pen, then you will have to buy that particular pen of 3 rupees at rupees 30, because there will be no competition, because there is only one producer, and you want to purchase a pen, then you will have to give that particular price. So they were controlling the price also. That is why they made an association. अब पेन किसी ने बना रहा है, कोई अगर पेन बना रहा है तो कोई इरेजर बनाने का वो अपना ले लिया कि हम इरेजर बनाएंगे, और इरेजर कोई और नहीं बनाएगा, तो इरेजर पर कंट्रोल। लाइक दैट दे वर जस्ट कंट्रोलिंग ऑन द प्रोडक्शन एज वेल एज द प्राइसेस, एंड दे वर, और ऐसे करके क्या कर सकते थे वो, एक कंपटीशन को रेगुलेट कर रहे थे, यानी कंपटीशन होने ही नहीं दे रहे थे वहां पर। अगर कोई कंपटीशन हो भी रहा है तो उसको ब्रेक कर रहे थे। यू माइट हैव सीन वन मूवी आल्सो स्टारिंग Sri Govinda ji. I heard, I saw that movie also, that there was a fight between two, that one dhaba wala and that hotel man, the hotelier. So they were just fighting and they were just trying to control their customers, है ना? So that was the thing that is to be going on in the factories, in the towns. नंबर और एक काम क्या था ट्रेड गिल्ड्स का, दे रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। ये सबसे बड़ा काम एक देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि वो लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई नया आदमी जो है वो ट्रेड में नहीं आ जाए, हमारे टाउन्स में जाकर आकर ट्रेडिंग ना करे। हो सकता है कोई नया ट्रेडर आ जाएगा, है ना, वो ज्यादा कोशिश करेगा पैसे देकर लेबर से काम करवाने के लिए। चलो 2 रुपये डेली दे रहे हैं तो वो 3 रुपये देना शुरू कर देगा। ही माइट ऑफर 3 rupees, 2.5 rupees per day, for example. I'm just giving you a few examples. So that's why they wanted to restrict the entry of the new people in the trade, so that there should not be any competition while producing, and they can maintain the monopoly. They can produce any number of goods and they can sell it at any prices. That is the reason for the formation of trade guilds, and that is also the reason why the new traders, these new people, were just going or moving towards the countryside or villages to hire people from there and convince them to produce goods for them. Let us see what happened next. So the fourth reason is what? Monopoly rights, that we were talking about. Rulers granted the monopoly right to produce and ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पर्टिकुलर एसोसिएशन। उस टाइम के रूलर्स, यानी कि हो सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी के रूलर्स हो और दूसरे डायनेस्टी के रूलर्स हो, वो लोग भी क्या करते थे, वैसे डिफरेंट एसोसिएशन को वो ग्रांट कर देते थे मोनोपोली। ठीक है, ये जो रबर का प्रोडक्शन जो है आपका कंपनी हमारे एरिया में बनाएगा और प्रोडक्शन करेगा और बेचेगा। तो सम टाइम दिस मोनोपोली राइट्स वर गिवन टू दोस
different guilds, that association of traders, by the government side also, by the rulers अगर दे देते हैं इजाजत कि आप ही कर सकते हैं ये काम, तो फिर वो मोनोपोली राइट हो गया, अब वो लोगों को खरीदना पड़ेगा मनचाहा दाम में. Now another thing was expansion of world trade and acquisition of colonies. और एक वजह ये है कि why the new traders were moving to the countryside towards the villages. अब due to the expansion of the world trade बढ़ रहा था, है ना, वो expand हो रहा था, और colonies जो है acquisition थे, यानी कि बहुत सारे colonies एक दूसरे के अंदर आ चुके थे. So British government was also forcing at that particular time for the production of goods and necessary goods. So it was difficult for the new merchants to set up business in towns, and that is why they were moving to the countryside. अब देखते हैं कि पुअर पीजेंट्स लोग को क्या फायदा हो रहा था. पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस इन द कंट्रीसाइड बिगैन वर्किंग फॉर द मार्केट्स. वो लोग तैयार भी हो गए काम करने के लिए कि चलो बहुत अच्छा है, हम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है. अब क्या क्या फायदा हो रहा था, लेट अस सी. नंबर 1, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. उनके पास एक दूसरा काम करने का सोर्स मिल गया, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि सालों भर जो है वो खेती बाड़ी होती नहीं है थ्रू आउट द ईयर. सो दे वर जस्ट स्टार्टेड दिस वर्किंग बिकॉज दे गॉट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. और क्या है, वर्क फॉर ऑल. कभी कभी ये भी होता है ना कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द सेम फैमिली डू नॉट गेट वर्क. तो यहाँ पर अगर एक नया काम उनको मिल जाता है, बैठे बैठाए घरों पर बैठ कर काम मिल जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि चलो फैमिली के सब मेंबर काम कर सकता है, घर में बैठ के प्रोडक्शन कर सकता है. तो ये भी एक फायदा हो रहा था उन लोगों को. मल्टीपल वर्क, एक साथ कई काम कर सक रहे थे, है ना. शाम में ये काम कर ले रहे हैं, प्रोडक्शन कर ले रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, और दिन भर जो है वो जाके एग्रीकल्चर वाला काम कर ले रहे हैं. तो एट द सेम टाइम दे वर डूइंग द मेनी वर्क. that was few of the benefits of the people in the countryside. Extra income was also one of the reason. उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा था, डबल इनकम हो रहा था. ऐसे क्या है कि शाम में जो है किसान लोग तो आराम करने लगते हैं, अब यहाँ शाम में भी काम कर सकते हैं, सुबह में भी काम कर सकते हैं. सो दे वर गेटिंग एक्स्ट्रा इनकम. यूज ऑफ लेबर रिसोर्सेज, और सारे मेंबर एक ही फैमिली के सब इस्तेमाल भी हो रहे हैं. एवरीवन कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी हो रहा था. टाउन और कंट्री साइड के पीपल के बीच में एक रिलेशनशिप भी बन रहा था, है ना, गांव के लोग और शहर के लोगों के बीच में. सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स दैट दे वर गेटिंग. मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क was done in the countryside. Merchants towns में ले जाके बेचते थे, लेकिन काम जो है वो countryside में हो रहा था. So these are the benefits, my dear students, and we will deal with more other thing examples in our next class. That is all. Hope you got the things that I have just discussed with you all. Tomorrow get ready for the next class. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.